हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आगे चलेंगे। आर्टिकल 368 इन पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यहाँ पे ये ख्याल रखना है दैट पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका टाइटल है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बस एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डील्स विद द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ख्याल रखना है दैट ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट एनी स्टेट लेजिस्लेचर, neither the president nor the prime minister nor the council of ministers nor the judiciary. Nobody has the power to amend the constitution except the parliament. So Article 368 deals with the constituent power of the Parliament and the procedure for making the amendments. It states that the Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. तो आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, आपको पता होगा दैट द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मीन्स द पावर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन और द पावर टू मेक एडिशंस और ऑल्ट्रेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया, उसके बाद only the parliament was vested the constituent power. So parliament, it can make additions, variations or repeals. That means it can add things in the constitution, it can delete things, or it can substitute various provisions in the constitution, and it can amend any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. तो constitution को amend करने का procedure क्या है? ये कहा जाता है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. इसका मतलब क्या है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अमेंड करने का तरीका न ज़्यादा सख्त है लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ना उतना आसान है लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ बोथ. मीन्स इसमें थोड़ी सी रिजिडिटी भी है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है. तो प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का? एक अमेंडमेंट करने के लिए a bill is to be introduced and this bill, it can be introduced in either house of the parliament. That means it can be introduced either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. इसके अलावा इस बात का ख्याल है रखना है that this bill can be introduced by a minister or by a private member and it doesn't require the prior permission of the president. उसके बाद this bill can be passed by a special majority or a special majority with the ratification of state legislatures. लेकिन ख्याल ये रखना है that each house must pass the bill separately and finally when the bill is passed by both houses and it is presented to the president must give his assent to the bill. That means the president can neither withhold his assent nor return the bill for the reconsideration. That means the president must give his assent, and this provision was added by 24th Constitutional Amendment Act of 1971. So this is the procedure for making amendments. However, यहाँ पे ख्याल रखना है that the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution. ये basic structure होता क्या है हम ये आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे ख्याल रखना है that parliament, उसका amending power, उसका constituent power, it is not unlimited. It has the limitation of basic structure. That means parliament cannot amend the basic structure of the constitution. So this concept of basic structure or doctrine of basic structure was ruled for the first time by the Supreme Court in the famous Keshavananda Bharati case of 1973. ये basic structure होता क्या है हम ये आगे पढ़ेंगे.
So under Article 368 there are only two types of amendments. That means under Article 368 the Constitution can be amended by two ways. One is by special majority of the Parliament, and the second one is through the special majority of Parliament and the ratification of half of the states by a simple majority. हम आगे पढ़ेंगे. But some other articles provide for the amendment of certain provisions of the Constitution by a simple majority. That means although Article 368 में दो ही तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में अमेंडमेंट का एक सिंपल प्रोसीजर भी है. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है दैट these provisions through which the constitution can be amended by a simple majority, these amendments are not deemed to be amendments of the constitution for the purpose of Article 368. That means these amendments lie outside the purview of Article 368. In short, the Constitution can be amended by three ways. One is by simple majority outside Article 368, and the second one is special majority of the Parliament, and the third one is special majority of the Parliament plus ratification by state legislatures of more than half states. And this second and third, these two come under Article 368. आगे चलेंगे. Amendment by simple majority of the Parliament. That is the majority of the members of each house present and voting. That is similar to the ordinary legislative process. जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है, कोई भी ordinary law, when it is made by the parliament, it is passed by a simple majority. Simple majority होता क्या है? Let's assume that the total capacity of the house or total number of seats in the house is 100, और 100 में से irrespective of the total number of seats in the house जितने भी आए होंगी उनकी majority. Let's assume that out of 100 only 30 are present and 16 are voting in favor. That means this number 16 out of 30 is a simple majority. हमें ये नहीं देखना है whether the number of people who are present are more than 50 or not. हमें देखना है कि लोग या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने आए हैं, कितने प्रेजेंट हैं और उनमें से कितने वोट दे रहे हैं. इन दिस एग्जांपल मैंने कहा कि 30 प्रेजेंट है और 30 वोट दे रहे हैं. अगर 16 और 17 और मोर देन 16 MPs are voting in favor of the amendment, it is deemed to have been passed by a simple majority. Examples क्या है? Admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states and alteration of area, boundary or name of existing states under Article 3. Means under Article 2 and 3 अगर हम एक नई स्टेट को एडमिट करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं या स्टेट का नाम चेंज करते हैं, इस वजह से क्या होगा? ऐसे स्टेट्स को एडमिट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए या उनका नाम चेंज करने के लिए वी हैव टू पास अ बिल एंड दैट बिल इज टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. उससे क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट हो जाएगा. कैसे? हम अक्सर करते हैं कि एक स्टेट है जिसका नाम ए है एंड द पार्लियामेंट इज पासिंग अ बिल टू चेंज दिस द नेम ऑफ द स्टेट टू बी. इस वजह से क्या होगा? सिंस द बिल हैज बीन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स में इस स्टेट का नाम अभी तक ए था, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा टू बी. तो इस वजह से शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट आ गई. इट इज एन ऑटोमेटिक अमेंडमेंट और इट इज एन इनडायरेक्ट अमेंडमेंट. वी इंटेंडेड टू चेंज द नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, बट subsequently an amendment was automatically made in schedule 1. So this type of amendment by a simple majority, it is outside the purview of Article 368. Hope आपको समझ आया होगा. हम आगे चलेंगे. Two types of amendments under Article 368. उनमें से पहला टाइप है special majority of the parliament. Special majority का मतलब क्या है? Majority that is more than 50% of the total membership of each house and a majority of 2/3 of members present and voting. इसका मतलब क्या है? हम एज्यूम करते हैं कि हाउस की टोटल कैपेसिटी 100 सीट्स, 100 सीट्स में कम से कम 50 सीट्स का प्रेजेंट होना स्पेशल मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी है. मैं एग्जांपल दूंगा. हम एज्यूम करते हैं द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस इज 100 एंड 80 पर्सन्स आर प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ देम आर वोटिंग. अगर 80 पर्सन्स में से 51 पर्सन्स ने वोट दिया, इट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस.
but it is not the two-third majority of the members present and voting, because 51, 52, 53 persons out of 80 means less than 66.66%. So out of 80 कम से कम 54 or 55 persons should vote. That will cover our absolute majority and two-third majority. Means absolute majority, that means out of 100 seats 51 से ज़्यादा seats they must vote in favor. Number 2, out of 80 seats, that means members present and voting, two-thirds of the members must vote in favor. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन चीज़ों को अमेंड करने के लिए वी नीड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. आई होप को आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. उसके बाद अदर टाइप अंडर आर्टिकल 368, दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ये आपको समझ आ गया. प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट मीन्स इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर्स भी पास करने चाहिए बाय अ सिंपल मेजॉरिटी लाइक एन ऑर्डिनरी एक्ट. बट कितनी स्टेट्स? एट लीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स. इंडिया में 29 स्टेट्स है. कम से कम 15 स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रेटिफाई द बिल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. आफ्टर दैट इट विल बी मेड एन अमेंडमेंट. तो इस तरह की स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन किन चीज़ों में ज़रूरत है? उन चीज़ों में इस चीज़ की ज़रूरत है when a bill seeks to amend the federal provisions. Federal provisions में क्या क्या आता है? Federal provisions में election of president and its manner आता है, Supreme Court and High Court, and in fact the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. That means if you want to amend Article 368, you need a special majority of the Parliament and ratification by the state legislatures of more than half of the states by a simple majority. I hope आपको ये समझ आया होगा. उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? मैंने अभी आपको बोला दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द ओनली एक्सेप्शन इज दैट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में नहीं बोला है. द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन मेनी जजमेंट्स, और हर एक जजमेंट में एक एक प्रोविजन आ गया है अंडर दिस कैटेगरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In India, the constitution is supreme. Sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, it is the basic structure. The parliament cannot amend it. Secular character of the constitution, basic structure. Separation of powers between the three organs of the government, this is the basic structure of the Indian constitution. Federal character of the constitution, basic structure. Unity and integrity of nation, added in preamble, basic structure. Welfare state under part 4 of the constitution, that means directive principles of state policy. Basic structure. Judicial review, power of the judiciary is the basic structure. Freedom and integrity of freedom and dignity of individuals, basic structure. Parliamentary system is the basic of the Indian constitution, it is the basic structure. Rule of law under article 14, basic structure. Harmony and balance between fundamental rights and directive principles, the basic structure as ruled by Supreme Court in Minerva Mills case. So these are some of the provisions included in the basic structure. I hope आपको समझ आया होगा, and I hope आपको ये concept of amendment of the constitution समझ आया होगा. For any queries, kindly mail me on sajadwani657@gmail. You can reach me on Facebook on my page Genesis Academy, or my page or my channel on YouTube, Genesis Academy by Dr. Sajadwani. You can reach me on Instagram, Dr. Sajadwani, or Facebook, Sajadwani. Thank you for watching and have a nice day.